गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। क्या शुरू करेंगे? कॉमन टर्म्स यूज इन जिम। नंबर वन इज सेट। The number of times you perform a certain exercise is called a set. Number two is reps. The number of times you lift the weight is called repetition or reps. Number three is form. Form means the correct technique to lift the weight or to contract muscle against resistance. Number four is rep range. Deciding the number of times you will lift a certain weight for all the sets. Typically, the rep range is used to classify training as either light or heavy, and not the weight you are lifting. Between 3 to 5 reps per set is heavy. 8 to 10 reps per set is moderate. 12 to 15 reps per set is light. Fifteen to 20 reps per set is very light. Split. The pattern in which body parts are split for training in a week. For example, if you train your upper body one day and lower body on another, you are on a 2-day split. If you are training full body together once a week, you are on a 1-day split. Technical note: heavy, light, or moderate. It is not the weight, but the energy pathway that is employed to lift a weight and its associated oxygen depth and lactic acid production that qualifies a training session as heavy, moderate, light, or very light. Light or very lightweight training involves contracting muscles up to 20 reps. With good technique, this uses the aerobic pathway. And the load is light and creates little or no oxygen depth. So even if you lifted 100 kilos on the leg press, but lifted with good technique for 20 reps and without reaching fatigue, it is very lightweight training, irrespective of your gender. Heavyweight training, on the other hand, is when you can only lift 3 to 5 reps with good form. Most of us beginners reach that point with as little as 2 or 5 pounds on the side laterals that train the middle deltoid. So 5 pounds may seem light, but it has employed an anaerobic pathway for contracting the muscles involved and is therefore heavy due to EPOC and other factors. This same 5 pound on a lunge could allow you to do 20 reps and therefore qualified as lightweight training, as it has employed the aerobic pathway for the muscles involved. Number two, rules to plan the correct weight training sequence. Rules to plan the correct weight training sequence. There are certain rules that need to be followed so that your time spent in the gym is most effective. These are: first, number one is warm up, should be specific to maintain workout. Number one should be warm up.
Number 2 is exercise should recruit maximum number of muscle fibers. Number 3, duration of workout should never exceed 60 minutes. So based on these rules, a correct sequence of strength or weight training has been evolved, which is followed world over. Though I am not sure if it is being followed in the gym you go to, now here is the thing. If you don't want to get into details of these rules and how the sequence developed and just want to get with the planning bit, skip the straight to page 77 from the summary, otherwise read on. The 3 basic rules to plan a weight training sequence. Rule number one is specific warm-ups. A common mistake in gyms is either a complete lack of warm-up or doing a completely non-specific warm-up. A complete lack of warm-up will be very obviously jolt the joints and use momentum versus technique to bring about movement, which will lead to an injury, if not now, then definitely by the next session. There is basic awareness nowadays. So much people do a warm-up, but in a really time pass manner. Some common examples: walking, jogging for 10 to 20 minutes on the treadmill before performing weight training exercise. Yeah, that is wrong. Even if you are doing legs and not upper body. Running 5 to 20 times on whatever random number your coach barked out to you today around the tennis court before picking up your racket. Number 3, reminder to Mrs. Rujuta Madam. Focus on weight training and leave this tennis finish scripts to another time. Okay. So only weight training example, then the right arm up allows the blood flow to move through the specific muscle groups and warm up the specific joints that will be trained that day. Other than saving time, this saves another precious entity, muscle glycogen. So on a day when you squat, you should warm up using less than 50% of the weight you will squat with. Same goes for back or chest. And once you have warmed up the multiple joints exercise, you don't need to warm up when you move to single joint exercises. Follow these instructions for a correct warm-up. Perform a warm-up set of 12 to 15 reps before starting your training. Use 50% of the main workout weight. Rest for 30 seconds to 3 minutes before starting the main workout set. This leads to muscles and joints being warmed up with the exact mechanics that will perform. On the workout set, it reduces chances of using momentum to lift weights, allows you to lift maximum weight in the main set, makes muscle less susceptible to injury and provides for a sort of dress rehearsal for the breathing and motor skill. रूल नंबर 2 इज मैक्सिमम मसल फाइबर रिक्वायरमेंट. चलिए इसके बारे में कल पढ़ेंगे. सो हमारे साथ डॉक्टर साहब है, इसका ऊपर थोड़ा और चर्चा करने के लिए बुलाएंगे डॉक्टर साहब को. ओवर टू डॉक्टर रमेश मिश्रा. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार. ये जो चैप्टर अभी शुरू हो गए हैं
ये सब टेक्निकल थिंग्स है। ये टेक्निकल थिंग्स गंभीर तक जाना पड़ता है और इसको मेमोरी में रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी रुजुता मैडम ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत कोशिश किए हैं और इनका कोशिश में ये है कि ये बता रहे हैं कॉमन टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं और इसके बाद बता रहे हैं रूल्स। करेक्ट वेट ट्रेनिंग के लिए रूल्स क्या होते हैं। ये रूल्स में आते हैं स्पेसिफिक वार्म अप और मैक्सिमम मसल फाइबर रिक्रूटमेंट। इसके बाद वो एक टेक्निकल नोट दिए हैं। इसके बाद आता है डिस्कशन। इसके बाद फिर रूल 3 आता है। हाँ, ऐसा बाद में एक टेबल दिए हैं। पहले जैसे एक टेबल में समराइज किए थे ऐसा टेबल में भी समराइज किए हैं। तो इसको क्राम इन करके मतलब वो मन में ज्यादा रखना है और इसका डेप्थ में जाना है। कॉमन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टर्म्स ऐसा होता है कि पहले एक वर्ड होता है सेट। सेट का मतलब वो है नंबर ऑफ टाइम्स वी परफॉर्म सर्टेन एक्सरसाइज। जितना बार वो करते हैं उसको सेट बोलते हैं। और इसके बाद रेप द नंबर ऑफ टाइम्स वी लिफ्ट द वेट। रिपीटिशन इज कॉल्ड रेप्स। एक रेप मीन्स कितना बार हम करते हैं इसको एक रेप बोलते हैं और रिपीटिशन करने को रेप्स बोलते हैं। फॉर्म फॉर्म को करेक्ट टेक्निक टू लिफ्ट द वेट और टू कॉन्ट्रैक्ट मसल अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इसको फॉर्म बोलते हैं। ये सही फॉर्म में हुआ या नहीं ऐसा आलोचना होता है। और रेप रेंज क्या होता है। ये डिसाइडिंग द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल लिफ्ट ए सर्टेन वेट फॉर ऑल दिस सेट। जितना सेट हम करेंगे 5 सेट करेंगे। मिनाल जी बाल बात बोलते थे चलिए हम 2 सेट करेंगे, चलिए हम 3 सेट करेंगे। इसे जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम करेंगे इसको एक सेट बोलते हैं। और रेंज क्या होता है कितना नंबर ऑफ सेट हम करेंगे इसको रेंज बोलते हैं एक सर्टन वेट के लिए। और typically the rep range is used to classify training as either light or heavy and not the weight you are lifting. लाइट वेट हेवी वेट ये 2 किस्म का रेप रेंज होते हैं। बिटवीन 3 to 5 steps per set is heavy और 8 to 10 reps per set is moderate। 12 to 15 reps per set is light। 15 to 20 reps per set is heavy is very light। और रेप्स संख्या बढ़ता है और वेरी लाइट से सॉरी ये हेवी से आहिस्ता आहिस्ता हेवी से मॉडरेट मॉडरेट से लाइट लाइट से वेरी लाइट। कैसे हुआ न 3 to 5 reps per set is heavy। 8 to 10 reps per set is moderate। 12 to 15 reps per set is light और 15 to 20 reps per set is very light। और स्प्लिट स्प्लिट एक टर्म है द पैटर्न इन व्हिच बॉडी पार्ट आर स्प्लिट फॉर ट्रेनिंग इन ए वीक। फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रेन द अपर बॉडी one day and lower body another day you are on a 2-day split। if you are training full body together once a week you are on a 1-day split। फुल बॉडी टुगेदर कर देंगे एक्सरसाइज तो 1-day स्प्लिट होगा और पार्ट पार्ट करके अपर बॉडी एक दिन और लोअर बॉडी एक दिन करेंगे तो 2-day स्प्लिट होगा। तो इसमें टेक्निकल नोट भी दिए हैं इसको पढ़ के अपना
मेमोरी में रखना चाहिए। और इसमें ये क्या बताते हैं, हेवी वेट ट्रेनिंग ऑन द अदर हैंड, ये लाइट वेट ट्रेनिंग के बारे में और हेवी वेट ट्रेनिंग के बारे में, कितना किलो उठाना है। ये 100 किलोज ऑन द लेग प्रेस, बट लिफ्टेड इट विथ गुड टेक्निक फॉर 20 days एंड विदाउट रीचिंग 30। ये लाइट वेट होता है, 20 reps और 100 किलो लाइट वेट। और हेवी वेट में कितना होता है, हेवी वेट में 20 reps, लेकिन 3 पाउंड ऑन ए लाउंज, तो ये 2 to 5 पाउंड ये होता है। हेवी का मतलब ये बोलते हैं कम करना, और लाइट का मतलब ज्यादा करना। और इसके बाद रूल 2 में, ये रूल पहला में कॉमन टर्म्स यूज किया, ये कॉमन टर्म्स यूज किया। और दूसरा दूसरा जो आया था तो इसमें रूल्स टू प्लान द करेक्ट वेट ट्रेनिंग, इसमें 2-3 रूल है। वार्म अप, इसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वार्म आउट, ये 3 को फॉलो करना है। पहला वार्म अप करना है, और वार्म अप के लिए स्पेसिफिक वार्म अप होता है। इस स्पेसिफिक वार्म अप में हम क्या करेंगे, पहले अपना बॉडी को वार्म अप करेंगे, और इसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, और इसके बाद कितना देर तक करेंगे इसके बारे में हम डिसाइड पहले से करें। और रूल 1, इसमें रूल्स भी है, क्या है ना, रूल्स में स्पेसिफिक वार्म अप होता है। और इसके बाद दूसरा रूल होता है मैक्सिमम मसल फाइबर कैसे यूज होगा, इसके लिए भी रूल्स होते हैं। ये सब हम टेबल जब डिस्कस करेंगे, अच्छा क्लैरिफिकेशन हमको मिल पाएगा। रूल 3 में आता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मोर देन नॉट मोर देन 60 सेकेंड, ये होता है रूल 3 में। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ये रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रूल्स, और पहले जो आया वार्म अप, और ये जो रेप, ये स्प्लिट, ये सब हमारा मेमोरी में रखना चाहिए। तो इसीलिए हमको ज्यादा कोशिश करना है ये सब समझने के लिए, और समझने के बाद मेमोरी में रखने के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, और जो एक्सरसाइज का फिजियोलॉजी पढ़ते हैं इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो आज इतना डेप्थ तक नहीं जा पाए, कल से फिर डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।